Hi everyone, a very good evening to all of you and welcome back once again to another class of PIB Current Affairs. In today's class, we are going to cover the PIB news from 8th and 9th of December 2025. I hope the preparations for the upcoming NABARD examinations are going well. So please give me a thumbs up if you can see me properly and can hear me properly, then I'll quickly start the class. Good evening everyone, please give me a thumbs up if everything is fine, if you guys can see me properly and can hear me properly. Good evening and good evening everyone. ऑलराइट, नाबार्ड के लोगों को मैं बता देता हूँ कि आपको 13 या 14 तारीख तक का करंट अफेयर्स करके जाना है, बिकॉज इट्स बीन अ ट्रेंड इन नाबार्ड एंड इन आरबीआई एंड इन ऑल दीज रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम that they ask question 1 week before the examination as well. Most of the questions will be there from the month of November till first week of December. Some questions will be from the October as well. So October, November और ये जो 10-12 दिन और December के हैं, these are the most important days for you guys for the phase 1 examination of NABARD. And yeah, so please give me a thumbs up if everything is fine, my dear friends. जल्दी से बताइए. ठीक है, I think I have some thumbs up, so let's start the class. And there are some very important news today, some very important questions. Although जितनी भी ये न्यूज़ है, जो भी ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे वो हैं जो कि पार्लियामेंट्री रिप्लाईज से निकल के आए हैं. अभी कोई नया इनिशिएटिव भारत सरकार लेके नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ द पार्लियामेंट सेशंस व्हिच आर गोइंग ऑन. Right, so let's start the class and let's talk about the very first news. The very first news is about Putin's visit to India. As you know, Russian President Putin visited India. He was on an official visit to India and some MOUs and agreements were signed and some announcements were made, right? इसमें से I don't think that there is going to be any objective question. So, but if you get any descriptive question based on this particular thing, so you guys will be able to write it well. सबसे पहले if we talk about the MOUs and agreements in the area of migration and mobility. In the area of migration and mobility, an agreement has been signed on temporary labor activity of citizens of one state in the territory of the other state. Agreement on temporary labor activity of citizens of one state in the territory of other state. रशिया के अंदर एक स्टेट का लेबर दूसरे स्टेट में जाके काम कर पाएगा. इंडियंस की बात हो रही है, राइट? एंड अग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन कॉम्बैटिंग इरेगुलर माइग्रेशन. जो इरेगुलर माइग्रेशन है दोनों देशों के बीच में, उसको खत्म करने के लिए भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है. ठीक है. दूसरा, इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड फूड सेफ्टी, एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड ऑन द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, मेडिकल एजुकेशन एंड साइंस. एंड an agreement has been signed between FSSAI, Food Safety and Standards Authority of India, and Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Well-being of Russia in the field of food safety. तो जैसे हमारे देश में जो काम FSSAI करता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स का काम वो करता है, वैसे ही सिमिलरली वी हैव in Russia we have Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Well-being, right? So इन दोनों के बीच में agreement साइन हुआ है for the for in the field of food safety. Clear? Then in the area of maritime cooperation and polar waters, an MOU has been signed on the training of specialists for ships operating in polar waters. The training will be provided from Russia side. Russia की तरफ से training provide कराई जाएगी. In the area of customs and commerce, in the area of customs and commerce, a protocol has been discussed between the CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs, and Federal Customs Service for a cooperation in the exchange of pre-arrival information in respect of goods and vehicles moved between India and Russia. जो भी goods या फिर vehicles इंडिया रशिया के बीच में मूव करते हैं, उनके बीच में जो प्री अराइवल इंफॉर्मेशन है वो दिया जाएगा. ठीक है, क्लियर? Academic collaboration भी है, MOU on scientific and academic collaboration between Defence Institute of Advanced Technology Pune and Federal State Autonomous Educational Institute of Higher Education, National Tom State University of Toms. ठीक है, तो ये हो गया academic collaboration. And I don't understand लोग कहाँ चले गए आज क्लास में, इतने कम लोग क्यों हैं भाई? What's the reason why there are very less number of people today? चलो एनीवेज, अनाउंसमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं जी. प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑफ इंडिया रशिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन टिल 2030. The Russian side has decided to adopt the framework agreement to join the IBCA, that is International Big Cat Alliance. Russia is going to join the IBCA. Grant of 30 days e-tourist visa on gratis basis to Russian nationals on reciprocal basis, and grant of group tourist visa
ऑन ग्रेटिस बेसिस टू रशियन नेशनल्स। जो ग्रुप टूरिस्ट वीजा है दोनों कंट्री एक दूसरे के टूरिस्टों को देगी। क्लियर है? तो ये कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स और कुछ मेजर एग्रीमेंट्स थे बिटवीन रशिया एंड इंडिया ड्यूरिंग रशियन प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। How much maximum financial assistance is provided to startups at seed stage under Innovation and Agri-entrepreneurship Development Program of राष्ट्रीय कृषि विकास योजना? So there is a राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, my dear friends, आपको पता होगा RKVY, which is overall known as RKVY Raftar. So there is a component under RKVY Raftar that is Agri-entrepreneurship Development Program. ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि उसके अंदर कितना मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है स्टार्टअप्स को। तो देखो भाई, एक बात तो क्लियर हो गई दैट this particular subcomponent or component of RKVY is for providing innovation support and entrepreneurship support to the startup, right? So the objective is that only to promote innovation and agri-entrepreneurship by providing financial support and nurturing an incubation ecosystem in the country. It is being implemented since 2018-19 as the part of RKVY. Okay. The ministry has appointed 6 knowledge partners. So there are 6 knowledge partners and 24 RKVY एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स क्या कौन होते हैं? इंक्यूबेटर्स वो होते हैं जो कि स्टार्टअप्स को ऑलराउंड सपोर्ट देते हैं, राइट फ्रॉम प्रोटोटाइप डेवलपमेंट टू द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सो 6 knowledge partners are there and 24 agri-business incubators are there for implementation assistance and for providing incubation support to the startups. Clear? Each knowledge partner can select a maximum 20 to 25 startups and each agri-business incubator can select a maximum of 10 to 12 startups for providing the innovation support, for providing the incubation support. Clear? And what is the financial assistance that is provided? So for all the startups which are at the idea stage or the pre-seed stage, rupees 5 lakh rupees provided in one installment, and for the seed stage 25 lakh rupees is provided in 2 installments, right? 50% each, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट में 12.5 मिलते हैं, दूसरे इंस्टॉलमेंट में 12.5 मिलते हैं। दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, अप टू है ये, मतलब मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। ठीक है, ऑलराइट, सो द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स इज ऑप्शन डी, 25 lakhs. Well done, destination. I think you have been going through the PIB releases. Question number 2. Ministry of Cooperation has inaugurated the second Earth Summit in Gandhinagar, Gujarat. The summit was the second in the series of 3 summits. It was organized by NABARD and which of the following organizations? Right? So Minister of Cooperation, Mr. Manish Sir, has inaugurated the second Earth Summit in Gandhinagar in Gujarat. ठीक है, तो अर्थ समिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, पहली चीज तो ये याद रखना। इसको रियो अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में उससे कनेक्ट नहीं करेंगे, इट इज नॉट दैट। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इट इज फॉर स्ट्रेंथनिंग, द ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी एंड टू रीथिंक the various aspects of rural development and derive the result oriented solution. So basically the idea behind the Earth Summit is to discuss how we can take forward the rural development, right? The summit is the second in the series of 3 summits. The first one took place in Hyderabad and the next one, the third one, will take place in New Delhi next year in the year 2026. 2026 में अगला summit जो है वो होगा, right? It was organized by NABARD and Internet and Mobile Association of India. ठीक है, नबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसको मिलके ऑर्गेनाइज किया था। देयर वर सम लॉन्चेस एंड मेड ऑल द लॉन्चेस वर अंडर द सहकार सारथी इनिशिएटिव ऑफ नबार्ड। ठीक है, देयर वर 13 न्यू सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लॉन्च्ड अंडर सहकार सारथी विच इंक्लूड डिजी केसीसी, कैंपेन सारथी, वेबसाइट सारथी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडेक्स, EPACS, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज एप्लीकेशन, शिक्षा सारथी, सारथी टेक्नोलॉजी फोरम एटसेट्रा। इनके बारे में डिटेल सरकार ने नहीं दी है, सो वंस दे कम आउट विद डिटेल्स वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज इनिशिएटिव्स, डोंट वरी, बट यू नीड टू नो व्हाट इज दिस सहकार सारथी। सहकार सारथी, माय डियर फ्रेंड्स, इज अ डिजिटल इनिशिएटिव. इट वाज डेवलप्ड बाय NABARD. ठीक है, इट वाज डेवलप्ड बाय NABARD एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू मॉडर्नाइज एंड स्ट्रेंथन इंडियाज कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड रूरल फाइनेंशियल इकोसिस्टम। बेसिकली ये क्या करता है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको डिजिटलाइज करने का काम करता है, सो दैट दे कैन बी एट पार विद द कमर्शियल बैंक्स, राइट, ताकि इनको कमर्शियल बैंक्स के बराबर रखा जा सके। ठीक है, क्लियर है? तो ये था अर्थ समिट. इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नबार्ड एंड इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IMAI. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.
Ministry of Health and Family Welfare has designated the three institutions as Center of Excellence for AI with an aim to promote development and use of AI based solution in health. Which of the following are the three institutions? That is the question. So a lot of a number of AI initiatives have been are there. A number of AI initiatives, my dear friends, are there in the area of healthcare. सबसे पहला है Center of Excellence for AI. So three institutions which are AIMS New Delhi, AIMS Rishikesh and PGI MER Chandigarh. These three institutions have been designated as the center of excellence for AI, and these have the responsibility to promote development and use of AI based solutions in health. Health के अंदर AI based solutions को लेके आना is the objective of these center of excellences, right? And for this purpose, the ministry has collaborated with Vadvani AI to provide technical support to these three centers of excellence. Clear? इसके अलावा there is a Madhu Netra AI. What is it? It is an AI solution which has been developed to enable the non-specialist health workers to conduct screenings for diabetic retinopathy. ठीक है, जो नॉन स्पेशलिस्ट हेल्थ वर्कर्स हैं दे विल बी एबल टू कंडक्ट द स्क्रीनिंग्स फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी, देयर बाय reducing the burdens on the healthcare workers. ठीक है जी. Then we have a clinical decision support system. It has been integrated with the national telemedicine platform, that is e-Sanjeevani, to enhance the consultation quality by streamlining patient complaint entry and providing AI based differential diagnosis recommendation. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अभी इसको हमने क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को क्या करा, ई संजीवनी के साथ कनेक्ट कर दिया, विच इज द नेशनल लेवल टेलीमेडिसिन प्रोग्राम थ्रू वेयर वन कैन इजीली टेक the tele consultation, the tele medical consultation, राइट. नाउ इसके साथ इंटीग्रेट करने से क्या हो गया कि जो पेशेंट्स की कंप्लेंट्स है उसको एआई जो है प्रोसेस करेगा एंड इट विल बी एबल टू रेकमेंड दी डायग्नोसिस. ठीक है. एंड इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है कफ अगेंस्ट टीबी. इट इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ पल्मोनरी टीबी इन द कम्युनिटी सेटिंग्स. कम्युनिटी सेटिंग्स में जो पल्मोनरी टीबी है उसकी स्क्रीनिंग के लिए कफ अगेंस्ट टीबी नाम का एआई इनिशिएटिव भारत सरकार ने लॉन्च किया है. ठीक है, क्लियर. So, which of the following are the three institutions? AIMS Delhi, PGI MER Chandigarh and AIMS Rishikesh. 1, 2 and 4 is the right answer, option C. Clear? Now let's talk about the questions in short, but before that, if you want to have the PDF of this class, just scan this QR code, join the Telegram channel, my dear friends, and get the PDFs. And जो लोग पहली बार क्लास में आ रहे हैं मैं उनको बता दूं, क्वेश्चंस इन शॉर्ट का मतलब ये है, there are some PIB releases. पहली बात तो आई होप कई लोगों को यही नहीं पता कि PIB क्या होता है. PIB is Press Information Bureau, which is the official website of the Government of India, and all the Government of India related information is provided first at this website and then in the other newspapers and all other things. ठीक है, मतलब जो आप करंट अफेयर्स दुनिया भर में पढ़ते हो रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो सब पहले यहीं पे आता है, राइट. चलिए, और क्वेश्चन इन शॉर्ट क्या है, कुछ पीआईबी रिलीजेस ऐसी हैं जिसमें 3, 4, 5 ही स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे काम के हैं. उन स्टेटमेंट्स को मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको दे देता हूं, जैसे कि ये वाला. Which of the following targets is incorrect under the Panchamrit declaration announced by India at COP26 in Glasgow? तो आप सबको याद होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है पंचामृत डिक्लेरेशन करके आए थे COP26 में ग्लासगो में जो हुआ था. ठीक है, उसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. 500 gigawatt of non-fossil fuel based installed electricity capacity by 2030, correct. 50% share of installed electricity capacity from non-fossil sources by 2030, correct. Reduction of total projected carbon emissions by 1.5 billion tons by 2030, not 1.5, 1 billion tons by 2030, right. This is incorrect. Reduction of carbon intensity of the economy by 45% by 2030, correct. And net zero emissions by 2070. ये याद रखना, पांचों के पांचों टारगेट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट. इनकरेक्ट हमसे पूछा था, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, Manya Shrivastava. So as I already informed this, that's tomorrow at 10 a.m. Tomorrow at 10 a.m. I'll be taking a class where I will be covering all the important ARD reports except NABARD annual report. NABARD annual report मैं already करा चुका हूँ. 5 रिपोर्ट हम करेंगे उस क्लास के अंदर और वही 5 ARD रिपोर्ट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. And Tamil is asking kindly cover the third advanced horticulture crop estimates. I think I have covered it. Tamil.
Let me see. I'll check it. If I have not covered it, then I'll definitely cover it in the next class. Don't worry. ठीक है, चलिए जी. Next question: with which IIT NMDC Limited, which is the PSU under Ministry of Steel, has signed an MOU to facilitate new initiatives in the area of cybersecurity and promote the adoption of modern digital technologies, including AI and ML, across NMDC's operation? It is IIT Kanpur. Option B, IIT Kanpur is the correct answer. India has recorded its highest ever addition of non-fossil capacity in the current financial year. How much capacity India has added? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली फॉर नबार्ड 31.25 गीगावाट. इंडिया ने सबसे ज्यादा नॉन फॉसिल कैपेसिटी इस फाइनेंशियल ईयर में ऐड किया है अब तक. कितना किया है? 31.25 गीगावाट. एंड आउट ऑफ दिस 24.28 गीगावाट इज दी सोलर कैपेसिटी. ठीक है, 24.28 गीगावाट इज दी सोलर कैपेसिटी. क्लियर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 was launched in 2019 for the consolidation of 1,25,000 final estimates of agriculture crops covered, sir, but not horticulture, which is released on 24th November. एक मिनट रुक जाओ, चलो अभी चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं. मेरे ख्याल से तो मैंने किया है भाई, बाकी देखते हैं. आर यू आस्किंग फॉर हॉर्टिकल्चर और नॉर्मल प्रोडक्शन? ये मैंने क्वेश्चन इन शॉर्ट में किया था, आई थिंक कवर. ठीक है, चलो. इफ तमिल सेलवन इज आस्किंग फॉर इट, आई विल कवर इट इन डिटेल, डोंट वरी. ये मैंने क्वेश्चन इन शॉर्ट में तो कवर किया था, जो उसका मेजर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि 369.055 मिलियन टन, ये मेरे को याद है नंबर. ठीक है, आई विल कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी. आई विल कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास इन डिटेल. ऑलराइट, चलिए. PMGSY 3 was launched in 2019 for, वैसे देखो, I don't think that they are going to ask anything from this. ठीक है, because the final estimates are there, and you know, the first advance estimates of 25-26 is also there. So that is why I believe I ignore it, because this is, I believe, not important for the exam. But ठीक है, if you're asking for it, I'll definitely cover it, because yes, you are right, these days examiners can ask anything. They are asking, in fact, anything. PMGSY 3 was launched in 2019 for the consolidation of 1,25,000 km through routes and major rural links connecting habitations. Up to which date the PMGSY 3 has been extended for the completion of ongoing projects? It has been extended till 31st March 2026. And one more related thing related to PMGSY, there was a World Bank impact evaluation done in 2019 for PMGSY. It has highlighted that the improved rural roads have led to the 10% increase in school enrollment for girls, the 7% rise in visits to health facilities, and 15% increase in proportion of households engaged in the non-agricultural employment. ये तीनों डेटा याद रखना, this is important. Clear? Next, with which country Indian Army conducted a joint military exercise Harmau Shakti 2025 in Rajasthan? From India side, the Dogra regiment participated. And it was conducted with Malaysia. Clear? Next question, Bharat Trade Net, a flagship digital public infrastructure which aims to digitize the trade documents, improve access to export finance and integrate India's trade ecosystem with global standards. It has been developed by, देखो, भारत ट्रेड नेट जो था वो इसी साल के बजट में, it was announced in 25-26 budget, right? And it is what? It is a DPI, it is a digital public infrastructure which is there, which has been created for digitize the trade documents and uploading all the trade documents at one place. So if anyone has to basically find something related to the trade, they can have the access to this particular portal that is called as Bharat Trade Net. It has been developed by Directorate General of Foreign Trade of the Ministry of Commerce and Industry. It works under the Ministry of Commerce and Industry headed by Piyush Goyal. Clear? The last question for today. The Department of Post, Government of India and JSC Russia Post have signed a bilateral agreement on the ITPS. This service, इससे क्या होगा? What's going to happen with this? It includes electronic advanced data transmission, end-to-end tracking and delivery confirmation, ensuring enhanced
transparency, security, and improved ease of customs clearance. What does ITPS stand for? It stands for International Tracked Package Service. The right answer is option A. ठीक है, चलिए, that's it for today's class, my dear friends. I hope all the questions and their explanations are clear. If you have any doubts, you can ask me. Otherwise, give me a thumbs up. And if you want to have the PDF of this class, just scan this QR code, join the Telegram channel, and get the PDFs. Thank you, Ashu, for the compliment. And I hope you clear the examination this time, and you would not have to be my fan of teaching, right? चलिए जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं. अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप. ऑलराइट, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? एंड यस, मैं फिर से बता दूं, लेट मी रिपीट इट अगेन, दैट टुमारो एट 10 AM, दैट इज ऑन 11th of December 2025 at 10 AM, I'll be conducting a comprehensive class on all ARD reports, right? So see you tomorrow at 10 AM. All right. मेरा AFO मेंस हो गया है. आप मॉक इंटरव्यूज ले सकते हैं क्या? ले लेंगे भाई, मॉक इंटरव्यू तो ले ही लेंगे. आप मेरे को DM करिए एट मैशी मनीष. I hope I'm glad to hear that, HV, and I hope you clear this examination this time, and wishing you all the best. There are 6 knowledge partners. All right, chalo, let's wind it up. I'll see you in the next class. That is on Friday. Till then, keep studying and keep studying hard. Goodbye, take care, and God bless.